नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत होगी हेल्थ केयर ग्लोबल के चेयरमैन और सीईओ डॉक्टर बीएस अजय कुमार से। लेकिन उससे पहले बातचीत शुरू करूँ, एक नज़र जरा मार्केट पे देखते हैं इस वक्त की ताज़ा हालत क्या है। और ऊपरी स्तर से तगड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस वक्त 56 पॉइंट के साथ ग्रीन पे है, लेकिन आप चार्ट देखिए तो ऊपरी लेवल से लगातार प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी रेड में है 120 पॉइंट के साथ, और मिड कैप में सबसे ज़्यादा प्रेशर है। 300 पॉइंट के आसपास की कमजोरी है, 274, लगभग 1% के आसपास वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है। गावा सर हमारे साथ जुड़े हुए। गावा सर, निफ्टी में लगातार प्रेशर बन रहा है, वीकेंड का असर है क्या कि लोग सोचा 2 दिन की छुट्टी रहेगी तो हल्का होके जाए? एक तो है 1645 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हाई टाइम पर रुकना चाहिए। अगर यहाँ पर खुलता तो एक पॉसिबिलिटी थी। ये 16,640 भी बहुत फास्ट, तो आज गैप उसके बाद था 16,700, उसके ऊपर खुला और उसके ऊपर खुल के ऊपर जाता तो शॉर्ट कवरिंग जरूर आती। वो हुआ नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है और एक फ्राइडे भी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वीकनेस है यहाँ पर लो लेवल। जैसे कि मैंने सुबह बताया, थोड़ी वीकनेस और बाकी है, आनी चाहिए थोड़ी वीकनेस और बाकी। कोई स्टॉक रडार पे आया गावा सर आपके? लॉन्ग तो नहीं होना चाहिए शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट श्री सीमेंट अच्छा लगता है, न्यू लो पर है। और क्या कहेंगे, दैट्स द बेस्ट। श्री सीमेंट है, ग्रासिम होना चाहिए। ग्रासिम में एक वीकनेस है, तो 1360 का एक स्टॉप लगा कर चले तो शायद 1300 भी पॉसिबल है ग्रासिम में। ये एक न्यू स्टॉक आया रडार में आफ्टर श्री सीमेंट। ओके, ग्रासिम में भी शॉर्ट किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं आज की कंपनी हेल्थ केयर ग्लोबल से बात। और डॉक्टर बीएस अजय कुमार जी हमारे साथ हैं, चेयरमैन एंड सीईओ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। साल का रिजल्ट बहुत बढ़िया, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया, और सारे पैरामीटर्स पे काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप साल भर का देखें तो करीब 38% की ग्रोथ के साथ 1400 करोड़ का रेवेन्यू है, 1395 करोड़। एबिटा में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, 235 करोड़ के आसपास आया, और मार्जिन 12 से बढ़ के क्लोज टू 17% आ चुके हैं यहाँ पे। और मुनाफा भी जो है बढ़ के आया 39 करोड़, जो कि पहले 200 करोड़ से ज़्यादा का लॉस था। तो साल का अंत बहुत अच्छा हुआ और क्वार्टरली भी बहुत बढ़िया है। और जो बेड की ऑक्यूपेंसी है वो ईयरली अगर आप देखेंगे तो वो भी ठीक ठाक थी, 59-60% की है, जो कि ईयर ऑन ईयर 5% की ग्रोथ यहाँ पे आई है। 54 से 59 हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या हम ये सिंपली एज्यूम करें नतीजों को देखते हुए कि प्री कोविड लेवल के जो पूरे पैरामीटर्स थे वो हम लोगों ने अचीव कर लिए हैं, और ये जो मेंटेन ग्रोथ है ये आगे भी देखने को मिलेगी FY23 में? I think we are now doing better than the pre-COVID level. And when we did the COVID level, obviously we all went down. And now we have fully recovered across India. Now, not only in big cities, but also in tier 2, tier 3 cities, our volume has picked up very well. And we expect this to continue now. And what are the possible reasons? Maybe because people are more aware of healthcare, and maybe some of the cancer patients were waiting, but that period is also over. So right now we are seeing very good inflow into all our centers across India. ओके, डॉक्टर अजय, मुझे एक चीज़ बताइए। एक तो आपका जो ऑक्यूपेंसी है वो 59-60% के आसपास है, एंड एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जो है आपका 11% ग्रोथ के साथ 39,000, बस 62,000 के आसपास, नहीं सॉरी, या 62-3 के आसपास बैठता है। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या इंडस्ट्री एवरेज यही होता है या इससे बेटर की अभी गुंजाइश रखनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी मुझे कम दिख रहा है। Now, as you know, in oncology, a lot of it is outpatient care. And the only reason, our main centers in cities like Bangalore, Excellence and all are very high RPOP. Because high technology is used, they come for complicated. We are over 55,000. But when you go to the tier 2, tier 3 cities, the RPOP will be obviously lower because of the type of patients and also more being outpatient.
So that is the reason we see the average ARPOB around 35,000-36,000. But we expect this to, as the volume increases, as the our number of centers capacity, we expect this to increase over a period of time. I can't speak for the industry average because it is ours is only oncology, and we are not comparing it to multi-speciality. That is the issue we always have. But in oncology, I think we are doing very well in terms of the average what we are generating. डॉक्टर साहब, जियोग्राफिकली कहाँ सबसे बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है? Pardon, I didn't understand. जियोग्राफिकली मतलब किस इलाके के हॉस्पिटल्स में सबसे अच्छा रिटर्न मिल रहा है? See, for us, our center of excellence is the best return. Okay. Because it has got over 450 oncologists we have. In Bangalore, we have about 80 oncologists. And it is very growth oriented with complicated cases across the world they come. We get almost 15-16% of the growth there is from international patients. So that is why our best hospital is in Bangalore. Of course, now we are followed by Gujarat, which is the next in line, doing very good in Ahmedabad, our cancer center. Then, of course, now we are looking at Mumbai and other places. But tier 2 cities are also doing good. Like you look at centers in Nagpur, Nasik, or Vijayawada and all are all picking up well, and we are establishing like many centers of excellence there. Okay, sir, you also have fertility centers, 7 fertility centers. उनका कामकाज कैसे चल रहा है? Actually, post-COVID, they are better now. They are improving, and we have seen increased footfall. And I think because in the COVID period, nobody came for infertility. So we are seeing a healthy growth. Footfall is increasing. Mainly, we are monitoring the footfall because that is an indication of the future. And certainly that is going in the right direction. Our revenue are also hitting the historic highs now. So we see a significant demand and need for this kind of growth. Doctor, footfall कितने realize होते हैं? Yeah, you have to look at footfall to conversion rate. Usually about 60 to 70% realize when they come in footfall. Then those who come for actual cycles will be about 45%. 45%. Doctor, 1944 beds you have, close to 2000 beds हैं आपके, जिसमें से 1700 operational है, right sir? Yeah, we are actually, our footfall, our bed occupancy has actually increased. And we were normally running around 48-50. Now it has gone to high 50. As you know, once we reach close to 70, it is almost like full occupancy. But really, in oncology, we don't look at that. We really look at the number of patients who come, and we see about 120,000 new patients a year in across HCG, and about close to almost 300 to 350,000 patients coming in, recurrent patients, revisits and all. So that is a growth which is happening, like almost like 15 to 20% per year. That is the most important thing for us. Correct. But the fact the patient increase is also increasing. We don't have to build more things because already occupancy is being at 55. We have enough space to accommodate because with the new technology, new ways of treatment, we are requiring few more beds. Okay. डॉक्टर साहब, बेड में कितना इंक्रीज होगा FY23 में, और वो ब्राउन फील्ड ही होगा या उसमें कुछ ग्रीन फील्ड भी है? Yeah, at this point we are not going to increase beds significantly because we have enough beds in all our center, and we are also not going to do any green field. Some brown field we may, but as we have indicated, our goal will be to consolidate. And each of our centers needs to reach the mature status and improve the margin. So we are working on that, improving the margin, improving the each center, because we have 23 oncology centers, quality of care. So this year will be a year of consolidation. There may be few exceptions, but not really looking at major greenfield or brownfield this coming year, this present year. Okay, sir, last question एक और आपसे है कि जो हमने आपसे पूछा था कि एवरेज रेवेन्यू ऑक्यूपाइड बेड का है, वो आपको लगता है कि 523 में इंक्रीज होगा? क्योंकि आप कैपेक्स नहीं ले रहे हैं, ना ब्राउन ले रहे हैं ना ग्रीन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा,
तो उससे मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि ये इंक्रीज होगा और आपके मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे, FY23 का पिक्चर बेटर होगा। Yeah, we are at about 18% margin right now. We expect that, as we go forward to reach in the 20s. Our mature centers are already, like if you look at Bangalore or Ahmedabad, they're already over 20. Bangalore actually is over 25% margin, which is very healthy. So our target is, between 21, 22 to 25. And I think we will reach close to 20 in the next year or two. And then we will start improving. At that point, we may go for some brownfield, some M&A and all that. Okay. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड विशेस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और डॉक्टर अजय ने हमें समझाया कि इस साल जो है और बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू पर बेड, क्योंकि जो प्री कोविड लेवल था उससे भी ज़्यादा बेटर हो रहा है और न्यू टेक्नोलॉजी की यूज़ की वजह से चर्निंग और ज़्यादा फास्ट है, तो वो भी एक इनके लिए बेटर जाता है। और चूंकि बहुत तरीके का कैपेक्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए मार्जिन पिक्चर यहाँ से और बेटर होगी, जो कि 20% के आसपास हो सकती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हेल्थ केयर ग्लोबल वैल्यूएशन के टर्म्स में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है इस वक्त हॉस्पिटल सेक्टर में, अगर कोई देख रहा है तो 281-82 रुपये के आसपास ये ट्रेड।